Gajpati district of Odisha. Covering an area of 3,850 square kilometers, the scenery of this district is very pleasant. According to the 2011 census, the population of the district is 5,77,817. 22.8% of the total population belongs to tribal communities. These tribal families make their living in poverty. The main livelihood of the district is agriculture. Farming is mostly dependent on rainfall. The annual rainfall in the district is 1,925.6 millimeters. But the impact of climate change, irregularity of rainfall has hampered agricultural production. So there is a great need for irrigation projects. Realizing this, Isara, a social institution in Odisha, is working for the poor people of this area. Plans have been made to utilize the natural water resources in different areas through diversion-based irrigation projects. बहुत आगु प्रचुर परिमाण में वर्षा होता वर्षा ठीक समय होता क्लाइमेट चेंज प्रभाव सब गाँव गुड़िया पड़ुଛି तेणुक वर्षा ठीक समय होनी फल पानी लोक जमिकी मिलूना पानी अभाव जो लोक मैंने किसी कर बहुत दादन खटिया बाहर को चलुले मेनोनेट सेंट्रल कमिटी से सहायता कले पखापाखि 25टा गाँव में पानी तलू को आसला पाइप जोगिंग. The success of this project is that the water can be brought to far distances for investment in agriculture and can be used as drinking water in homes. In the first phase, door-to-door survey was conducted by Isara volunteers. The volunteers collected all the details of the simple tribal families living below the poverty line. The volunteers tried to find out from them the problems faced by the villagers. आमर रोसई बासे आइतिला गाधोइबार मध्य असुविधा नदी आका जाइकी पिला जाक धरिकी कि लुगा की कौन की सबू नाड़ आकला नाड़ कि आम प्रथमे सरकार साहाଯ୍ୟ कूह नलकूप देवार सेटा भी आमको थुलेला ना अंटला ना पानी कूहर एले नलकूप खरा को पूरा सुखी गला पानी. After that, the head of the Isara organization himself went and discussed with the villagers about their problems and how they could be solved. The final conclusion was that if the water problem could be solved, then they could improve their agriculture. As a result, most of their problems can be solved. Finally, a decision was taken to build the DBI project with the joint efforts of the Isara and the villagers. मोर बापा बस्तरीगुड़ा ग्राम को जाइए सेटारे पाइप जाक लाइन देखिकी सेटर भाई को गोटे पचारे ये संस्था ये पाइपटा क्योंटार तुम पाइल से कहले ये पाइपटा इसारा संस्था आमको देइछन्ति बोली कहले आम जाइलु इसारा संस्था से माने आम निज ग्राम को आसते से अनुसार गाँव में बैठक करूँ जो पानी पर्वत पहाड़ बोईकी जाऊला नदी को ताहा आम ए पाइपलाइन माध्यम बा डीबीएस सिस्टम जो पाइप देइछन्ति से माध्यम आम बर्तमान गाँव में पानी रो समस्या को अल्प किछि दूर जाइछि. After that, Isara provided the necessary material along with the technical knowledge and skills. The villagers completed the construction works by donating labor. After the construction of the project was completed, the villagers felt its benefits. या आया इधर पानी रो काली नाड़ बासी जाता रो कि अब कारो सब तक पाई न थारो ऐसा सस्ता वाला जिंदगी आसले देखियो आसले तांगे बुलिया को ए पाइप धरके आसले गाँव वाला निजे आमे समाधान देलु. After the construction of the project, emphasis was given to paddy cultivation. Paddy cultivation became possible in those farms which could not be cultivated due to lack of water. आम कि शुणा पाऊँ जे इसारा माने गोटे संस्था ये कार्यक्रम करुच्ची जमी बगीचा एक प्रकार पानी जल जगैबे बोलिकी आम जिते शुणु से सहित जोगाजोग करी से सहित आम पूरा एमती किसी संगठन मीटिंग पत्र करी से सहित जोगाजोग करी डाकी आम गाँव में बसिलु बसला निष्पत्ति नेलु जे आम कि आपण मैंने पाइप दिंतु आम कि श्रमदान गाँव वाला देवु ए प्रकार निष्पत्ति नहीं से कार्यकारी होइछि. Similarly, on behalf of Isara, the beneficiaries were provided with better quality indigenous seeds for vegetable cultivation. आगुरी जो बजार मंजी आणुलु से सब बहुत प्रकार खराब मंजी आसला एबे जो इसारा संस्था मंजी दो से भल मंजी दउछती जाके आमे भल फसल करि पारछु भल फसल करके आमे खाइ पारछु.
In addition, the beneficiaries could benefit from the supply of high-quality saplings. Some beneficiaries could use these seeds and saplings for commercial yield. Efforts were made by ISARA to develop the skill of the beneficiaries. With a view to increase agricultural production, ISARA volunteers and agricultural experts visited the farms of the beneficiaries and imparted training on modern farming systems. As a result, agricultural production could be increased. आग आमे छोट छोट होड़ा करिकिरी आउ मुड़ीगिरी लगौथिलु किंतु इशारार जेतेबेले आम गाँ को आसिकिरी सब सार माने दीदी मैंने आसिकिरी आम मानकु से लाइन लेंथ बा तार प्रोसीजर अनुसार आमको जो प्रकार देखेले से प्रकार रोचु करूचु मध्य एबे तो करूचु तार फल फली अधिका हबो बोलिकिरी आमर बेसी विश्वास अछि से जो डिस्टेंस तार रखिछंती तार डिस्टेंस अनुसार सूर्य किरण पानी पवन ठीक रे पाइबे बोलिकिरी अधिका अमल हबो बोलिकिरी कहिछंती. To prevent wastage of water, the beneficiaries were taught to practice mulching system farming. As a result, more water could be invested in agriculture. या आम जानी नथुले सर एटा इशारा इशारा जमती कहले आम गोटे शिखिछु एटा मंदा पानी देउथुले एबे एमती गोटे इसाई पालो पालो उछेकी गोटे सूर्य किरण जमती बाजी टिके खरारे न सुखिबो सी अनुसार उद्धार होइबो बोली कि पालोटी पके जाओ आ घास हबनी सेटा माटी उर्वर रहइबो घासटा जे खत जोड़ा से माने पालो द्वारा नहीं सेटा घास उठिबोनी आ. On behalf of ISARA, the beneficiaries were taught how to produce fertilizers and pesticides organically at low cost using local resources. By implementing this, the beneficiaries can eat poison-free food and the environment can also be protected. सार किछि पकेइनु आमे गोबर खत पकेइकिरी आमे बगीचा करछो आउ खाइबा को भी मीठा लागुचे आउ बिक्री भी करूचो बिकले जल्दी नहीं जाउछंती आउ खाइबा को भी मीठा. Another strong initiative of ISARA was to provide nutritious food to all the beneficiaries. That is why the beneficiaries were encouraged to have a kitchen garden at the back of their house. As the water given for domestic use can be overused, water for washing dishes and clothes is used in this kitchen garden. As a result, the beneficiaries could eat nutritious vegetables throughout the year. नदीरू नालूरू आनिबार पिला का धरे कि जीवार सामी पिला बेले आउ पानी धरिकी आइला आउ थे आनी जीवार काम कलु नला पुति पुति आइलु सीटू पानी आणलु एबे कुंडरे पानी रहउची आउ बारिकी आइला कंसा माजिलु हांडी धुइलु पानी आणलु सीटाका खाउचु आमे आउ नदी नालू को जाउनु नुगा धुइबा पानी बासन माजिया पानी सबु बांगणबाड़ को मचबाड़ी की छाड़ुचु. पानी असुविधा थिला नदी जीवारो नाल को जीवारो गुलिया पानी राखल भी खाइबारो एबे इंसार सस्ता आसिया को पानी देवा को गिडा परिवा पत्र करछु इंति लगे उबले पानी आनी के हम गछ मूलर पकीबार फसल हेले खाइबार नल नै एबे पानी आसिया को सब किस बांगण टिके ओलड टिके किस लगेइकरी परिया पत्र सी संस्था लोक आका कदली देले कदली गछ लगेइकी बाड़ी फसल करछु. Sinisingi is a village under our Udagiri block in this district. A DBI project has been constructed by ISARA on a hill near the village. After the completion of this project, the geographical map of this village has changed. Jayanti Gamang, a woman farmer of the village. After completion of the DBI project, she is cultivating various vegetables in her backyard. She has brought many changes in her livelihood by producing vegetables and using them herself as well as selling them. Seeing her house creates an illusion of a tourist destination in the mind. ना माँ बापा फागर किसी ना मंडाटी करते लो आओ किसी ना सुआटी करते लो मंडाटी करते लो किसी जो रोजगार कर पार न थे लो सारा संस्था जिते बड़े पानी हमको जगेले अपन मानक दयारो बहुत सुविधा पाउछु खाउछु भी बिकुछु बजार बाड़ सेमती किसी चढ़ुछु आउ गोटे गोटे जिनस 5,000 14,000 3,000 4,000 सेमती बिकुछु. Maheshwar Pujari of the village is 80-year-old. Maheshwar has not taken any rest during construction of the project. Even though he had 3 acres of land, it was not suitable for cultivation.
By breaking the rock, Maheshwar converted the land into a farmland of the terrace cultivation system. Today, many types of vegetables are available in his land along with paddy cultivation. आमर संस्था वाला दिन आसिले बुली बुली आसिले मत पचारे आज्ञा बाबू तुम ये कौन कौट पा अच्छी अच्छी आज्ञा जे पा आसला आम गोटे उपदल हम गाँ को भल हम बोले जाकि पा देखिली पा जा प्राय 3 किलोमीटर पा देखिली समस्त जाकि पाटा देखू से कम आरंभ कलु कम आरंभ कर पानी आसला के धान कलु मांडिया करतु दी फसल करची. With the help of Isara and the help of the villagers, drinking water has been provided to all the families of the village. Maheshwar also did not miss that opportunity. He has arranged for drinking water in the backyard of his house. Wastage water of utensil cleaning and cloth washing has managed to make a kitchen garden at the back of her house by making good use of water, and has been able to provide additional income as well as the nutritious food. In fact, this type of DBI project can bring change in the lives of many poor families living in villages today and help them grow as human beings.